राजमन्ना। हम भी अपनी आर्मी लाने के लिए निकल पड़े। तो हेलो गाइस, आज हम सलार मूवी, ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है सलार मूवी का जिसके लिए हम की मूवी दिखा सकें। ये एक एक्सप्लेनेशन चैनल है जिस पे हम आपको सलार मूवी का पूरी एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कास्ट और ये सब। ये यूट्यूब के कैटेगरी के अंदर आता है जिससे कि कोई वॉयलेंस हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं मूवी के बारे में बता के। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये पोस्ट ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड के लिए। ये देखिए, आप पोस्ट ओवरव्यू करेंगे हम इसका, तो कास्ट की जो स्टोरी होती है, फॉलो टू इंस्पिरेबल चाइल्डहुड फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स होते हैं चाइल्डहुड, ठीक है। देवा नाम होता है उसका, प्रभास एंड होता है दूसरा नाम उसका वेदा, ठीक है। अब क्या होते हैं ये, डीप बॉन्ड इन एक्नोट बाय एब्सोल्यूट लॉयल्टी एंड सर्व आ सेक्रीफाइसेस के बारे में बताई जाती है। तो सेटअप कैसे होता है, जो फर्स्ट हाफ टेक्स out over an hour to establish they were living a quite low profile life with his fleshly protective mother hidden a dark part of and a terrifying capacity for a violence, ठीक है। उसके बाद आता है द एम्पायर ऑफ खानसार। जो खानसार का होता है वो एम्पायर कैसे होता है। द हार्ट ऑफ द फ्लेम इज खानसार, अ फ्रैक्शनल dystopian surveys a city-state ruled by a ruthless monarchy, complex tribal law, and serves internal political
कॉन्फ्लुएंशियस, ठीक है। जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है व्हेन अ कप इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वृद्धा फादर्स टू टेक ओवर द थ्रोन, वृद्धा reaches out his long lost friend Deva. Deva returns to the battlefield as one man army to protect his friend, setting off chains reactions of absolute cinema. तो हमारा जो फर्स्ट टॉप पार्ट होता है मूवी का वो स्टार्ट होता है, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है मूवी के बारे में। अब हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं जो कि चालू होता है अब। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड पेसिंग एनालिसिस। अगर हम स्ट्रक्चर्स एंड पेसिंग एनालिसिस करें तो कलर बदल लेता हूँ मैं, इससे अब समझ आएगा। द फर्स्ट हाफ होता है उसमें हैवी बिल्डिंग ऑफ सेटअप करते हैं। अ फिल्म इज बिगिन एट द डिलेबिलिटी स्लो पेस में चलती है फिल्म। Director Prasantha Neil takes his time setting up character motivations and the mystery surrounding Deva. Done. While the building feels slightly stretched and a bit generic to some, it lays down a meticulous foundation. The narrative speaks to life right before the interval blocks with an explosive action setup price that completely shift the tone. इधर हमारे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो इसका ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसका सेकंड स्ट्रक्चर बताता हूँ जो क्या करवाता है। इसका मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा पर्पल से बताता हूँ। द सेकंड हाफ नॉन स्टॉप एक्शंस एंड पॉलिटिक्स। डन। द फिल्म 90 मिनट्स ऑफ द मूवी आर इम्पॉसिबल डेंस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। मूवी 90 मिनट्स की होती है, आपको मतलब ऐसा लगेगा थ्रिल आ रहा है मूवी के अंदर। द फिल्म pivots entirely into the dark, suit-landed world of the Khansar. It delivers a rapid introduction of political houses, complex boldness, and a brutal tribal welfare. The action sequence scales up severely, completing in a jaw-dropping climax and a major twist that perfectly set up the upcoming sequel Salaar Part 2 Shauranga Revanam. तो हमारा इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो आपको खत्म हो जाता है। हम इसकी मेजर हाइलाइट्स हम स्ट्रेंथ की तरफ चलते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो इसकी मेजर हाईलाइट हैं स्ट्रेंथ हैं प्रभास द मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस। प्रभास dominates every single frame despite having less than 3 minutes of total dialogues. His hulking physiques, body languages, and intense grace make him look like a terrifying killing machine. यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे हो। उसकी खतरनाक तो गुस्से वाली बातें, 3 मिनट के डायलॉग्स हैं उसमें, इतनी खतरनाक जो वो है ना, क्या कहूँ मैं, पावर एनर्जी। पृथ्वीराज सुकुरमन परफॉर्मेंस। आ वृद्धा Prithviraj provides a sleeker, grounded, and emotionally resonant performance that acts as a real anchor in the movie plot. Done. Sensational action choreography. जो फर्स्ट सीन्स होता है स्टेबलिश ग्लोरी एंड डीपली सेटिस्फाइड फॉर एक्शन enthusiastic featuring incredible evolution movements where the hero destroys holders of enemies. Done. Stunning cinematography. Bhuvan Bodda creates a breathtaking visual styles using a monochrome, dark and industrial aesthetic that matches the cold nature of Khansar. इसी के साथ हमारी जो मेजर हाइलाइट्स होती हैं वो खत्म होती हैं। अब हम जाते हैं इसके क्रिटिकल ड्रॉबैक्स। इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, देखो। सबसे पहले आता है कन्वेंशनल सेकंड हाफ के अंदर क्या होता है, द पॉलिटिकल हायरार्की ऑफ खानसार इंट्रोड्यूस टू मैनी कैरेक्टर्स। बहुत सारी, जब मैंने भी मूवी देखी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आ चुके थे जिस वजह से मैं भी कंफ्यूज होता था। फ्रैक्शन टू क्विकली मेकिंग द प्लॉट कंफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सिंगल वॉचिंग। जो पहली बार देखा उसको घंटा समझ नहीं आया, लेकिन मैंने भी देखा था मेरे को समझ आया था दूसरी बार में सही तरीके से। ओवरवेलमिंग साउंड एंड बीजीएम्स while revving bassoon background score efficiently elevate the heroic movement. It is mixed, incredibly loud, and can feel explosive, noisy, or associated to ears at times. Big female characters, the extras like Shruti Haasan and Tiwari Rao are probably utilized severally merely as plot catalyst with very little deep or urgency. Extreme violence, the movie relies heavily on raw, bloodshot demonstrations and such gross which might be off-putting of visual views of family and audience. एक साथ हमारी क्रिटिकल टॉपिक्स खत्म होते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ उसके अगले टॉपिक की तरफ जो है इसकी वर्डिक्ट के बारे में। कैटेगरी की एक्शन ऑफ स्केल फ्रॉम 5
स्टार मिलते हैं इसको रॉ एंड मैसिव के लिए। परफॉर्मेंस इसकी 4 स्टार मिली है। प्रभास एंड पृथ्वीराज शेयर ग्रेट ग्रेट कॉम्रेड्स। वे पेसिंग एंड स्क्रिप्ट की बात करें तो इसको 3 स्टार मिलते हैं। स्लगिश फर्स्ट हाफ, ओवरली कॉम्प्लेक्स सेकंड हाफ। म्यूजिक एंड साउंड की बात करें तो 3 मिलते हैं। ग्रेट एवोल्यूशन बट एक्सक्लूसिवली लाउड। ओवरऑल रेटिंग करें 3.5 की रेटिंग आती है इसकी। मैसिव वॉच एक्शन एंड मैसिव सिनेमा। इसके साथ हमारी एक और स्लाइड कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं इसके अगले तरफ। अभी हमारी कितनी है 44 स्लाइड्स हैं, जिसमें हम 6 स्लाइड कंप्लीट कर दिए हैं। आप पूरी मूवी लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियो। मैं पहले ही बता दूँ आपको, ये कोई मूवी चैनल नहीं है। अगर आपको ऑफिशियल मूवी देखनी हो तो आप अमेजोन प्राइम पे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। और ये सिर्फ मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल बनाया गया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मेल पे जाके बात कर सकते हैं। तो पसंद करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट इंट्रोडक्शन करेंगे हम किसके ऊपर, सिनेमैटिक इम्पैक्ट के ऊपर। स्लाइड फर्स्ट होती है हमारी टाइटल स्लाइड होगी डन। जिसके अंदर हम करेंगे क्या, इसमें को एक सेकंड बताता हूँ। विजुअल लेआउट्स होंगे, स्प्लिट स्क्रीन लेआउट्स होंगे, डीप मैटर्स, बैकग्राउंड, लेफ्ट लाइट फीचर्स करेंगे हमें। हाई कॉन्स्ट्रक्टेड वाइड वाइड। द मेन टाइटल होगा द एनाटॉमी ऑफ सलार। सब टाइटल्स होंगे इसमें, द कंप्रेशन केमिस्ट्री नरेटिव एंड बॉक्स ऑफिस एनालिसिस पार्ट में। ऑथर इज इन टाइम्स ये फोकस फिल्म स्टूडियो है। प्रेजेंट स्क्रिप्ट, वेलकम एवरीवन। Today we are conducting an essayistic 60 slides deep cartoon qualifier directed by the Prabhas Neil. This film represents a massive case study in contemporary Indian myth making, dark universal world building and commercial box office architecture. We will analyze everything from its complex political law to its technical production machines. तो इसके साथ हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है, हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। इट्स अ मैसिव चैनल। सेकंड चैनल करते हैं, सेकंड स्लाइड होती है एक्सक्लूसिव समरी एंड प्रेजेंटिंग एजेंडा। मैं आपको बताता हूँ। विजुअल लेआउट करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे हम इसमें। ग्रेड स्लाइड, बैकग्राउंड बॉक्सेस, डार्क के तो इसको हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम कंटेंट बिल्डिंग में कमर्शियल इम्पैक्ट, बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन्स एंड द डीप इंटेंस ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ द television takes states of concept. Character में narrative करें physiological profiles of Deva and Pradha, X by X narrative structures and pacing and craft and legacy. Cinematography details, high volume sound design, industrial set fabrics, critical receptors and sequel framework. हमने करें उसकी प्रेजेंस स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं हम अपन टू नरेटिव navigate this massive 3 hours film efficiency. We have broken our analysis into 3 core pillars spread across 6 structured modules. We begin with the commercial content and world history, transition into character physiology and script architecture, and conclude with a technical craftsmanship and critical evolution. इसी के साथ भाइयों और बहनों हमारी सेकंड स्लाइड भी पूरी होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए न्यू चैनल फॉर मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको पहले बता दूँ कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। मूवी के लिए सिर्फ इधर एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टोरी से बताई जाती है। और हम थर्ड स्लाइड पर आ चुके हैं जिसमें कहते हैं चेंजेस कौन सी पिक्चराइजेशन एंड डायरेक्टर्स। इसमें बताएंगे डायरेक्टर का क्या विज़न होता है, क्या क्या सोचते हैं वो सब। अब अपन इसमें कर देगा तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 50% राइट साइड एम्प्टी कर सकते हैं। डायरेक्टर्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन करेगी। द डायरेक्टर प्रभास नील पोस्ट KGF डिलोगी सक्सेस और इसका हेवी मॉडिफाइड स्केट अप of this valued directional project for Umang 2014. Releases mandate करें to build a ruthless, lawless empire operating outside interna- international geopolitics rooted
purely in hyper-muscular loyalty, tribal blood loyalties, and extreme violent retribution. Presence चालू कर सकता हूँ the Genghis of Salaar. The Genghis of Salaar stream from director Prabhas Neil's desires to scale up the raw emotion themes of his debut film. एक मिनट रुको उमंगा. Neil's vision was to consecrate lawless Swarjan empire operating completely hidden from modern geological, driven entirely by absolute loyalty and brutal rebel ways. इसी के साथ हमारी थर्ड स्लाइड कंप्लीट होती है. मैं आपको पहले बता दूँ ये कोई मूवी का ऑफिशियल चैनल नहीं है. इधर सिर्फ मूवी आपको मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है. सो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. इसी के साथ हमारी कितनी स्लाइड्स पूरी हो चुकी है. इसी के साथ हमारी स्लाइड्स पूरी हो चुकी हैं. मैं देख के आपको बता दूँ एक सेकंड को 8 स्लाइड विच शुड बी कंप्लीटेड. अब मिल जाएंगे हमारी 4th स्लाइड के ऊपर. डन. वी गोस फॉर आवर 4th स्लाइड्स. इट्स आवर 4th स्लाइड्स. इसमें अपन करेंगे जस्ट अ मिनट. मैं कलर चूज कर लूँ पर्पल. द कास्टिंग ग्रुप एलर्जेनिक ग्लोबल स्टार प्रभास. डन. इसका स्लाइड कंटेंट करेंगे. प्रभास देवा करेगा कास्ट ऑफ एस्टैब्लिश फिजिकल stature and massive pan-Indian commercial box office draw post Bahubali. Prithviraj Sukumaran broadcast to provide a domestic rate, intense emotion, deep and a strong foothold in critical South Indian markets. अब इसके अंदर करें क्या Sanitary strategy, balancing a low dialogue physical powerhouse with a high accurate expansion and dramatic performance. Yeah. अब अपन इसको ऐसे देखो. मैं आपको मूवी के बढ़िया लेआउट बता रहा हूँ. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. तो मेरी भी मेहनत लगती है. आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से मेरे को भी अच्छा फील हो. The casting strategies was highly deliberate. Prabhas was selected for his massive physical presence and pan-India commercial poise, allowing the character of the Deva to communicate through raw physicality. Prithviraj Sukumaran was brought in to provide the necessary dramatic weight and intellectual balance as well the intelligent the emotion force of the play. इसी के साथ हमारी 4th स्लाइड कंप्लीट होती है. मैं आपको फिर बताना चाहूँगा ये कोई प्रभास मूवी का चैनल इस मूवी पे इस चैनल पे नहीं दिखाई जाएगी. ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है जिस पे मूवी दिखाई सके. इट्स ऑफिशियल चैनल फॉर मूवी कास्टिंग बताई जाती है. इस पर मूवी कास्टिंग वास्टिंग मेरी साइड. तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे. अब अपन आते हैं 5th स्लाइड के ऊपर. अपनी 5th स्लाइड कहती है प्री रियलाइजिंग आर्किटेक्चर्स एंड ग्लोबल मार्केट कंपैरिजन. ये मैंने आपके लिए 44 स्लाइड्स की मूवी के लिए आपको बताई दी है. आप मेरी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करें यार और सब्सक्राइब करें. ऐसा बताया रिलीजन एंड आउटरो टाइम्स बताते गेनिंग ओवर 83 मिलियन व्यूज विद इन 24 आवर. ट्रेजर लॉन्च की थी जुलाई 2022. डिले स्ट्रेटेजी मूविंग फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर rather than 23 to perfect extreme visualizing effect means organic adaptation. स्टार्ट होते फ्लैग तो हो रहा है इतना बराबर. और उसके बाद अपन देखते हैं इसका क्या. The pre-releasing comprehension was lessons in building digital hype. The treasure was dropped as Universal Band 5.12 generating a massive viral conversation. When the film delayed from September to December for real-time adjustment and still converting the selection to advantage multiple fans globally. इसी तरह हमारी सब्सक्राइब कंप्लीट होती है. मैं फिर बताना चाहूँगा ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है. मैं इसमें मूवी के एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं. प्रभास मूवी को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. करना था आप 6 स्लाइड 10 कलर बदलूँगा आपको.
ब्लॉकबस्टर का। ओपनिंग डे फिनोमेना द बॉक्स ऑफिस सर्च। सबसे पहले करूँगा विजुअलाइजिंग लेआउट को तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपको स्लाइड कंटेंट करना है। ग्लोबली डे वन पे क्रॉस की कम से कम 178.7 करोड़ INR, जिसकी प्राइस होती है $21.5 मिलियन USD। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने पैसे कमाए हैं। ये कोई हुआ नहीं है कमाना, भाई मेहनत लगती है इसके लिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करें। हाईएस्ट ओपनिंग डे क्रॉस फॉर एन इंडियन फिल्म 2023। डायरेक्टली डोमिनेंस करें, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी स्टेट पेयर विद एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल एडवांटेज टिकट्स बुकिंग इन नॉर्थ अमेरिका। Upon releasing, Salaar shattered the industry record, registering a global opening day crossed 178 crore Indian rupee. फर्स्ट डे बनाया भाई सब मूवी ने, इसके लिए 1 लाख बनता है। monumental figures permitted it at high opening day of any cinematic release in 2001, driven by record-breaking performance in home theaters and massive advantage sale overseas। इसी के साथ 0.6 लाख होती है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोई ऑफिशियल चैनल नहीं सलाह में देखने के लिए, एक एक्सप्लेनेशन चैनल जहाँ पर हम सलाह मूवीज़ और काफ़ी सारी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आपको ऑफिशियल मूवी देखनी है तो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हैं। हमारी 7th लाइफ चालू होती है, जिसमें हम ग्लोबल ब्लॉग्स एंड माइलस्टोन एंड फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल की बात कर सकते हैं। सबसे पहले ओवर इतना करोड़ महीने ग्लोबली highly successful across southern territories, stayed long-term critical hopes and northern in these peak regions, eventually remains record-breaking digital streaming right acquired by Netflix, supplemented by high-value satellite television broadcast deals. Presenters fits करेंगे चालू। So, looking at the full financial life cycle, the film crossed 700 crores mark globally. While the initial surge was powered by a massive opening weekend for fan turnout, the movie settled stable long-term run in Northern market. This radical revenue was further boosted by a record-setting on non-theatrical rights acquired by Netflix। इसी के साथ हमारी 7th लाइफ पूरी होती है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है मूवी देखने के लिए, इसके लिए आपको नेटफ्लिक्स को देखना पड़ेगा। यह है हमारा क्या मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल, एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसी के साथ हमारी 8th स्लाइड चालू हो चुकी है। 8th स्लाइड में चालू करूँगा बजट Active returns on investing ROI analysis. Visual layout करेंगे सिंपल horizontal breakdown बार चार्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ VFX बजट था अपना कितना 270 करोड़ एंड मार्केटिंग एंड कंटेंट कॉस्ट 30 करोड़। टोटल इनिशियल कैपिटल 300 करोड़। नेट प्रॉफिटेबल स्केल करें तो हाई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट टाइप yield over 100% returns on initial investment for producers humble spend to prefer shares and this is the financial efficiency against combined productions and marketing budgets of roughly 300 crore rupees. The film generate massive net profit for the production house. Humble films cannot yield a structural returns on investment solidify the models of making high budget, high concept action movies. ये सर हमारी 8 स्लाइड कंप्लीट होती है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब अपन चलते हैं अपनी नई स्लाइड के ऊपर। पूरा कलर बदलूँगा, मैं कौन सा कलर लूँ आप बताओ, चलो देखते हैं। इस मॉडल में 9th स्लाइड में अपन बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सलार वर्सेस KGF के डायलॉग्स के बारे में। KGF चैप्टर 1 and 2 हाई ग्रेस गोल्ड
tint color plated, exotic raised rags to riches, narrative, relentless machines gun passing, Salat Part 1, deep desiccated monochromo short palette show one's emotions, bullets, fractional level political structures. Box office में करें सलाद based on much larger day one launch due to star power where KGF grew originally over months via word of mouth. While audience frequently compare Salaar to the KGF series due to director Prabhas need, the structure difference are sharp. KGF was a fast-paced, bold-triggered rise to the power stories. Salaar utilized a desaturated, slow burn narrative structures forced on paper politics, relying heavily on star building opening day mountains. इसी के साथ हमारी क्या 9 स्लाइड कंप्लीट होती है। अब हम जाएंगे अपनी 10 स्लाइड के ऊपर। जस्ट सिर्फ मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए, मेरे थोड़ा हाथ में दर्द है, मैं देख लेता हूँ बस 1 मिनट। जहाँ हाथ का दर्द सही हो गया, हाँ सॉरी रेस करता हूँ इसको मैं। इसके बाद अपन चलते हैं अपनी 10 स्लाइड के ऊपर। जस्ट 10 स्लाइड और जस्ट करता हूँ थोड़ा रविश section summary the skills of Salaar footprints. इसमें करेंगे साइड कॉन्टेक्ट में provides prabhas undisputed pan India commercial push after a streak of experimental release. World building benchmarks established Khansars as a visible culturify recognized fractional intellectual property. Industrial standards करें set a new technical standards for dark generic action filmmaking across the Indian subcontinent. To conclude our first module, Solar succeeding in providing vast massive box office pulls established the fractional world of concerts as deeply recognized pop culture's universe and set an entirely new visual and technique standards for dark industrial action cinema in the one. इसी के साथ हमारे 10 स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास 34 स्लाइड्स और बची मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हमारा मॉड्यूल 2 चालू होता है जिसमें हम बताएंगे द रोल एंड कल्चर ऑफ खानसास। Entering the dystrophy of Khansars. Khansars are hidden sorry city state located within the geographical boundaries of Western India. Political status बताएं independent in the nation and state are governed by own strict isolated people's council constitution completely hidden from the Indian government and international law. ऑपरेशनल कोड बताएं a multi-billionaire dollar elastic empire built on weapons manufacturing, resources exploitation and global trade. After presenting script we know enter module 2 focusing entirely on complex laws of Khansar. Khansar is not just a city, it is a fully sovereign, isolated city-state operating independently inside Indian's borders, governed by a brutal tribal constitution, completely separate from modern international law. इसी के साथ हमारी स्लाइड कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आपका प्यार मिलेगा तभी तो हमारे वीडियो हम प्लेस लाइक के ऊपर जाते हैं। तो हिस्टोरिकल ऑरिजिन्स ऑफ 10th सेंचुरी फाउंडेशन की बात करें अपन, तो अपन कह सकते हैं फाउंडेशन क्रिएशन इन 1128 AD of 3 violate nomadic worries clans seeking refuge and totally isolation from regular empires. The agreements the three tribes signs an absolute blood treaty to share the land,
resources and governance of Ansar's equality. मॉडर्न ट्रांजिशन की बात करें एवोल्यूट फ्रॉम a negative fortness into a massive heavily fortified modern industrial powerhouse over a nine countries. The historical lore dates back to 1128 AD when three violated nomadic clans founded Kansas to escape outside emperors. They signed an absolute blood treaty to share power equally, a treaty that held for centuries as the fortress slowly evolved into a modern, heavily fortified industrial stronghold. So, इसके साथ हमारी पुलिस लाइफ कंप्लीट होती है। सब्सक्राइब करें और 45 फ्लाइट में से 12 फ्लाइट जाने की अपनी चिंता 30 फ्लाइट आर लेफ्ट अगर नथिंग स्टार्टिंग फ्लाइट के ऊपर चलो द थ्री फोर ट्रेवल्स बोल्डनेस एंड रोल्स की बात करें अपन तो द मैनर्स द रूलिंग एरिस्टोटिक elites they commanded administrative controls, political strategy, and structural governance. The elite military guidance, nevertheless physically unmatched, and traditionally the ultimate defense of the kingdom. The Gyani arts, the industrial engines, they control the working class, supply lines, manufacturing, and wealth generation. Power in Kansas is divided among three distinct tribes. The manners from the political, aristology, and administrative tribes. The Sharians are the legendary physically unmatched military guidelines. The Gyaniars controls the working class engines, manufacturing weapons, and स्लाइड 14 की बात करेंगे अभी geological infrastructure तक three concentric walls. Three walls, the outer rims, industrial sectors, labor camps, and heavy guaranteed border security outposts. Ward to the central ring. High density residential zones for elite soldiers, miners, louds, and Burnicate administrative buildings. Wall 1. The inner cadet. The royal count, the Superman throne, and the highly secured security formed place of the running family. Geologically, Kansas is structured through three massive constructive defense walls. Walls, three houses, the industrial factories and labor camps. Walls 2 contains the residential zones for elite soldiers and administrative. Walls 1 is the inner cathedral protecting the royal guards of supreme thoughts. 14 slides should be completed. Then we are going to 15 slides. The ceaseful rules. The sovereign constitution. The ultimate law. If an internal war breaks out among the lords, the kings can declare a formal ceasefire by ringing the central city bells. The mandate. Once the ceasefire is active, all initial violence must stop initially. No blood can be shed until the ceasefire is officially lifted. Penalty. Totally examination of the entire clan or house that dares to violate the ceasefire order. The central plot defines of the film in the ceasefire rules.
under Khan's constitution. If internal war breaks out, the king can declare a ceasefire initially. All violence must stop. The penalty for violating this law is absolute total examinations of the offending cans. Our 15 slides should be completed. Then we go the 16 slides. So give me a 2 minutes. So going for the 16 slides. The hierarchy Raja Mannar and the counseling lords. The emperor Raja Mannar, the absolute supreme ruler who seized complete dictatorial control through political violence in 1985. The council composed of powerful regions, governors, lords who controls individuals, sectors, insides and outsides councils. The power balance. The king holds absolute veto powers but must constantly manage political alliance to prevent a united conflict corps. The political hierarchy functions like a brutal corporate dictatorship. Raja Munna sides at the apex as emperor, having seized power in 1985. Beneath him is a council of lords who govern individual sectors. The king holds absolute veto powers but must constantly manage alliance to prevent a cut. Here our 16 slides should be completed, so we going for the next 40 slides. Our 17th slides. Economic engines, the global elitist trade networks, or exports, hyper advanced untrackable weapon system supplied directly to global terrorist cells, cartels and rough nations. Multi-billion-dollar cash flows funneled through sophisticated offshore sales companies and international shadow banking networks. Resource and manipulation. Complete control over their minerals and local industrial products within their service zones. Khansar's immense power is backed by its global economic energies. In Janta City, state manufactures hyper advantages, untouchable weapon systems, supplying them to shadow syndicating worldwide. This generates billions of dollars in cash, laundered through complex international cell networks. Here our 17th slide should be completed, so we are going for the 18th slides. So 18 slides are. Here is our 18th slide. The voting system selections of the next emperor. Visual layouts. Slide contains the dagger protocol. Every voting loud owns a distinct custom formed commercialized dagger representing their seats in the council. The process to elect a new ruler or ratify major constitutional changes, lords must cast their physical daggers into the central sacrificer altar. The reality.
The voting process is irregularly manipulated through blackmail, assassinations, and practical ministry intimidation. Presenters scripts. Through a feudal monarch confers users a unique voting system called the Desert Protocol. Every lord holds a custom ceremonial daggers representing their votes. To elect a ruler, they cast their daggers into a central altar. In reality, this process is directed by intense blackmail and assassination. Here we have our 18th slide should be completed, so we erase it and then going for the 19th slide. Just a wait to be erased. Here we have 19 slides. So we started it, slide 19. Treble embeds the visual blending of concepts. Visual layouts. Grids of three manner identity करेंगे marked by clean royal insignia, gold threaded accessories, and sophisticated long robes. Soranga identifier defined by specific branding marks ported directly onto the skin, signifying Friday's tribal loyalty. The outcast marks slaves and lower cells laboraces are banned with brutal metal stamps on their forearms to restrict their movement. Visual branding is critical for several survival in Kansas. The manner used elegant gold-threaded incisions. The Saurians carry distinct contour tribal marks tattooed into their skin. Lower class laborers and outcasts are violently bent with metal stamps on their forearms to control their movement. Here our 19 slides should be complete. We are going for the 20th slide. Section summary, the deep of the world building. स्लाइड कंटेंट की बात करेंगे तो बियॉन्ड फ्रिक्शन करेंगे. खानसार एक्ट एज अ फुली रिलीज्ड लिविंग कैरेक्टर विद इन द फिल्म, नॉट जस्ट अ स्टैटिक backdrop. Narrative starts the complexity of the laws, making every single violation feels incredible, dangerous to the audience. Kinematic setup. This extensive world building provides endless material for a squirrel and spins off stories. Presenting script. To summarize, modules to Kansas is a masterclass in world building. It acts as a living character within the film. The complexity of its law ensures that every structural violence carries massive narrative sparks, laying down a high vision for multi-film. उन्होंने बोला था ना कि आज पानी नहीं है तो मत यूज, कम पानी यूज करना. तो भाई उन्होंने ही बोला था कि टंकी चेक करके मुझे बता देना, ठीक है? मैं उनको ये नहीं बोल रही कि मोटर चला दो. चिल्ला क्यों रही है? तो तू क्यों लड़ रहा है मेरे से? बता रहा हूँ मैं तेरे को. उन्होंने बोला टंकी खाली. Character deep dives and physiology. The phases of loyalty and betrayal. The human enlightenment.
The human enlightenment, transitional for geopolitical structures of concerns to internal physiology of the character. The code driven how childhood promises mutate under the extreme pressures of political ambitions and survival. The focus detail physiological breakdowns of devas, Dradha, and the key orchestrates of the cough. Presenter scripts. We now begin module 3, moving for a geopolitical to character physiology. We will analyze how childhood promises mutate under extreme political pressures, breaking down the internal drives of Deva, Gradha, and the major political masterminds. Here, slide 21 should be completed, and going for the 22 slide. Deva Prabhas, the sleeping volcano archetype. Slide content. The persona. Persona means that a word in which should be repeat or making a good sense. A quiet, soft spoken mechanical living in complete isolation in Tuneska, Assam. The reality terrifying hyper-violent warrior suppressing his true identity to honor a solemn promise to his mother. Dialogue protocols. Speak less than 3 minutes in the entire film, relying almost completely on physical postures, cold stares, and suddenly explosive accents. Deva representing the sleeping volcano character archetype for the first hour. He is presenting as a gentle mechanical living in isolation. In reality, he is a terrifying warrior, suppressing a massive capacity for violence to honor a promise to his mother. He speaks for less than 3 minutes, letting his physical presence to do talking. Here our 22 slides should be completed. Then we go for our next slide. So our next slide should be 23. Here we go Gradha, Prithviraj, the violence prince. The position. The ex- the exiled involved sons of Emperor Raja Mannar, constantly fighting for basic respect within his own family. The strategies relies heavily on emotions, inter- intelligence, long-term political planning, and deep personal loyalty rather than low physical violence. The fatal flaw, his absolute trust in his childhood friend Deva, which eventually triggers his family's ultimate downfall. Gradha is the emotional anchor of the narrative. As the exiled son of the emperor, he lacks Deva's raw physical dominance, relying instead on political intelligence and deep loyalty. His defining traits and potential fatal flaw is his total reliance on Deva, which reshapes the balance of power. Here our 23 slides should be completed. Here we go for the 24 slides of our explanations.
So 24 slides should be started. The yin and yang, Deva and Brata's duality. हाँ देवा क्या करता है द वेपन ऑपरेटिंग ऑन एब्सोल्यूट क्वेश्चनिंग लॉयल्टी ही डज नॉट केयर अबाउट द थ्रोन ही ओनली केयर्स अबाउट प्रोटेक्टिंग वृद्धा वृद्धा का माइंड्स ऑपरेटिंग ऑन पॉलिटिकल सर्वाइवल ही डायरेक्ट्स द वेपन्स choosing the targets and navigating the complex law of Ansar. The tension, a perfectly balanced dynamic that contains the seeds of an epic tragic clash in the upcoming sequel. The dynamic between Deva and Vradha is a classic case of cinematic duality. Deva is the ultimate weapon, operating on blind loyalty without any desires for powers. Vradha is the mind directing that weapons through political vectors. This extreme balance set up a high Tigers conflict for part 2. Here we go for the 24 slides should be completed. So we go for the 25th slides. Here how many slides should be left? There 14 slides should be left. So here we go for the 25th slide. Radha Rama Minor, the architect of the cop. कैरेक्टर्स की बात करें तो राजा मन्ना का हाईली इंटेलिजेंट fearlessly calculating daughters. A motivation driven by deep, long-standing resentment over past tribal betrayals and structural genders exclusions from the royal thrones. Strategy uses the intricate constitutional law of Khansas as a weapon, carefully orchestrating a coup while keeping her hands completely clean. Presenting script: Radha Rama Mannar is the true intellectual antagonist of the first half, driven by deep resentment over past tribal betrayals and her exclusion from power. She does not fight with weapons. Instead, she uses Khansar's complex constitutional laws to a massive political cap. Here should be upon our 25th slide should be completed. Here we go for next slide. Their next slide should be 26. Raja Mannar, the relentless prestige. The profile. An again battle hardened director who rules Khansars with an absolute iron fist. The paradox. Capable of mass tribals shouters, yet deeply vulnerable to the internal emotional manipulation of his favorite child. The narrative absence, his sudden decisions to leave the captions for a few days, creates the immediate power vacuum that triggers the entire film conflict. Raja Mannar is the again Patrick while he is a ruthless director who built his empire on mass shouters. He remains blind to the manipulations happening inside his own home. His calculated decisions to temporarily set away from the capital creates the power vacuum that drives the plot.
Here should be our 25th slide should be completed. Here we go for our next slide. Just a wait, I am raising up. 24th slide, the mother's fear. मम्मी का क्या fear होता है इसके अंदर. चलो बात करते हैं मदर्स का fear क्या रहता है. The ultimate constraint. Visual layouts, soft character background box separating his emotions characters for the violate political figures. The character Devas, deeply traumatized mother, living in constant crippling fears of his son's violent nature. The narrative functions. The narrative functions actively serves as Deva's emotions inhibitors, keeping his lethal abilities locked away for the first hours of film. The symbiotic shift, her eventual emotions, permissions for Deva to fight several as the ultimate catalyst that unleashes the first major action sequence. Deva's mother serves as a critical structure's purpose, traumatized by the past. Her fears act as an emotion inhibitor. Act as an emotion inhibitor that keeps Deva's violent natures completely locked down. When she finally gives him emotional permission to set in it, serves as the ultimate catalyst for the movie's action. Here should be our 27 slides should be completed. We are going for the 28 slides. So just wait for I am raising. It should be a 28 slide. Adhya Shruti Haasan, the external catalyst. Slide content the role an NRI student arriving from the United States, completely unaware of her father's past connections to Khansar. Serve as the classic audience surrogate, allowing the director to naturally explain the complex world to the viewers. Highly unfilterized characters who quickly turns into a standard demos in these cases, lacking independent personal agency. Presents the scripts. Aditya, played by Shruti Haasan, functions primarily as the audience surrogates. Her arrival from America forces other characters to explain the hidden world of Khansars to the viewers. However, critical her characters lacks independent agency, operating mostly as the plot device to be reduced. Here should be 20 slides should be completed. Here we go for the 29 slides. PLEASCP like and here we go for 29 slides. The villain Khansars.
Brutality personified. Lord Rudra forces on pure military brutality, relying on savage force and terror traces to clean his path. Lord Brava forces on deep shadows, conspicuous, slowly poisoning royals, aliens from within the court. Lord Nagraj controls the outer borders, exploiting labor's camps with absolute unchecked sadism, presenting strict. The secondary villains represents different faces of Triana Lords. Rudra relies on pure military brutality and terror. Lord Brava works on the shadows, poisoning loyal elegance from within. Lord Narang rules the outer realms, maintaining control through absolute unchecked sadism. Here our 29 slides should be completed. Here we go for the 30 slides. Here we have 30 slides. Section summary: motivational versus ambition. M versus A. Use the highlighter. Should be a pink color. Then we start. Slide content: provisional motivation. Deva and his mother operates entirely on survival, trauma, contentment and personal isolation. Political ambition. The lords and royal children of Kansas operates entirely on power, acquisition, legacy and treaty control. The collision. The narrative reaches peak intensity precisely where these two opposing forces violently collide. To sum up our character module, Salaar thrives on a collision of values. Deva operates entirely on trauma, con- contentment, and personal loyalty, while the Lord of Kansas are driven by pure power. Excretion, the flame reaches peak intensity precisely where their two opposing forces collides. Here our 30 slides should be completed. Here we go for the 31 slides. How many slides should be left? Therefore 9 slides should be left. And then our movie explanation should be completed. So here should be last module of this session. Module 4: narrative, pacing and fancy breakdown. The two acts narrative architecture. The pronunciation should be correct. Architecture. Here we start visual layouts. 5 constructed structures diagram, splitting the entire runtimes into two distinct deliberate storytelling halves.
Act 1. The Unlimited Hero. Set in India. Features a slow, methodical build up forced entirely on emotional resident mystery and domestic lives. Act 2. The Released Monster. Set in Kansas. Features hyper fast pacing, heavy political load jobs, and non-stop large-scale action sequence. ये रखा बाद में लगा दियो Structural pivots. The extract midpoint interval blocks act as a massive structural bridge connecting these two different cinematic worlds. We now enter modules 4, analyzing the structural architectures of the script. The film is sharply divided into two acts. Act 1 takes place in normal civilization and is a slow burn studying emotional resistance. Act 2 plunges into Khansar, shifting into high-speed political warfare and exposing action. Here, our 31 slides should be completed, and we are going for the 32 slides. We all know that life begins on and our explanation begins on. Give me 1 second, that's we erase it and going for next ahead. Chalo. It's a 32 slides act first. It's based on the acts of a setup, the White's life in Tinuska. Done, and we color choosing here. So done. Making a best color to maybe explain that. Slide going to be on the setting. A dusty remote coal stemmed town in Assam, India. That is quite mundane and emotionally heavy. Designed to make the audience feel the weight of Deva's forced contentment. Contentment, it should be pronounced containment. The direction. Prasthan Nails deliberately slow down the pacing here, teaching audience patience to maximize the impact of the upcoming violence. Presenters scripts. The opening movements in Timiska, Assam is deliberately low-key. The atmosphere is dusty, mundane and slow. He purposely gestures the narrative pacing here, forcing the audience to feel the heavy weights of Deva's fights every day. Containment before the storm hits. Here should be about 32 slides should be completed. Going for the 33 slides. How many slides should be left? I think 7, 3 and 4, 7 slides should be left. I'm going for the 33. And then our new explanation should be completed. Slide 33. It gives a massive information about this. So the inciting incidents, Aditya arrivals, visual layouts, 2-column cases and effect grids, making out specific narrative triggers and immediate structures of consequence. File contents. The trigger. Shadow agents from Kansas track Aditya down to Deva's remote location in Assam. The
escalations. The threat level scales up rapidly as specialized hits, spreads, breach Deva's quiet parameters. The structural shifts. The narrative leaves behind its domestic tones and shifts cleanly into high stakes protection mode storytelling. The inciting incidents occurs when shadow agents from Kansas take Aditya to Deva's remote location. This intensely shatters the domestic tone. The threat escalates rapidly as heavily armed hits spreads breach. The parameter shifts the script cleanly into the high-stakes survival thriller. Here should be our 33 slides should be completed. Here we go for our next slide. And this slide should be 34. 33 should be completed. Here we go for the 34. 39 slide should be completed. 39 in this मतलब 5 slide should be left. So 34 slide. Slide number 34. The first sparks. The coal mine fight sequence. Here we discussion about the coal mine fighting sequence. Here visualizing layouts, multi-layered structures, breakdowns charts, analyzing the mechanical build-up of an action sense. Slide content. Deva can no longer stand by as innocence is violated right in front of his mother. The visualizing designs set against a dark industrial processing plants utilizes heavy soot, black dust, and a brilliant high constructing lighting. Narrative impact. The electron and symbiotic release of Deva's long suppressed violent identity. The audience gets his first real playoff. Presenting script. The iconic coal mine sequence is the film's first major action. Playoff set is in a dark, soot-filled processing plants. It uses high contrast lighting to visualize and frames the releasing of Deva's violent identity, providing a massive cathartic moment for the audience. Here our 34 slides should be completed. Here we go for the 35th slide. And our 35 should be started. Yeah. It should be 35 slide. The internal blocks, the campfire beach. It's explain about the campfire beach and this visual layouts. It's not just interested for this slide contents के लिए the reveal. Deva's true identity as a legendary force is formally exposed to the modern Lord of Cancer. The action, a spectacular multi-stage fight sequence where Deva physically brand himself to protect his friend's honor. The Califangers, the formal declarations of war that breaks the Sultan's
campfires, completely restrains the flames strikes stakes. The just a wait, I'm reaching it and then explain. And then the interval blocks is the emotional and structural peak of the first half. Deva's true identity is exposed and he delivers a massive action sequence where he physically brand himself to protect Varadha. His formula violations of the case fires completely resist the stakes for the rest of the movie. It should be over 35 slides should be completed. How many slides should be left? There should be 4 slides should be left, and then our explanation should be over. Then 36. We are here for the 36. 36 slides. Then our 36 should be started. What children need to do. It should be a slide 36. At the second shift, flashback to the politics of 1985. 1985 down. So we starting from it should be curricular changes. Slide content. The structural change. The structural change करते हैं अपन. The movie travels back in the times. मूवी बैक जाती है ट्रेवल्स टाइम्स के लिए टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स. एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स को रूट्स ऑफ खानसास मॉडर्न प्रॉब्लम. मतलब तो खानसास में मॉडर्न प्रॉब्लम थी उनको एग्जामिन करती हैं डन. द कोप मतलब एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली हाउ राजा मन्नार वायलेटली वाइप आउट रिवील ट्राइब्स टू एस्टेब्लिश हिज मॉडर्न फैमिली डिस्टोर्शन. एक्सप्लेन मतलब इसमें करते हैं एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ राजा मन्नार वायलेटली मतलब राजा मन्नार कैसे गुस्सा करता है उनकी फैमिली फैमिलीज और उनके ऊपर एंड कैसे अपना मतलब अपनी स्टैब्लिश करता है द पर्पस गिव्स द ऑडियंस द एसेंशियल हिस्टोरिकल कंटेंट needed to understand why this current generation is bettering each other. The Act 2 opens by throwing the audience into a dense historical. मतलब एक्ट 2 ओपनिंग करता है एंड थ्रोइंग द ऑडियंस इनटू अ डेंस हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल मतलब डीप में फ्लैशबैक टू 1985 की जो डीप फ्लैशबैक में उसमें हम देखे जाते हैं. वी सी हाउ राजा मन्नार उसमें लिखते हैं कि कैसे राजा मन्नार वायलेटली मतलब कैसे गुस्सा करता है वो आउट द शौरंगा. शौरंगा ये टाइप पर कैसे गुस्सा करता है एंड वो सब करता है टू स्टेब्लिश इज मॉडर्न डिक्टेटरशिप. कैसे डिक्टेटरशिप मतलब कैसे अपना इस्टेब्लिश कर रहा है गुस्सा दिखाता है मतलब बंद बनाता है. प्रोवाइडिंग द वाइटल हिस्टोरिकल कंटेंट. इसके लिए अपन को प्रोवाइड द वाइटल हिस्टोरिकल कंटेंट नीडेड टू अंडरस्टैंड द करंट जनरेशंस बेट्रियल. इसके थ्रू हम कर सकते हैं करंट जनरेशन बेट्रियल की हम बात कर सकते हैं. Here we go over 36 slides should be completed. Here we go over 37 slides. Just a wait, I am reading this misleading content. इसको delete करना. How many slides should be left? 3 slides should be left and our explanation should be over. Here we go for the 37th slide. And looking some words, please follow. Please like
and आपको भी नई शादी हुई थी ना आपकी मैंने कहा हाँ अभी मेरी subscribe. Here our 37 slide should we start. Making a best color to introduce start. Now 37 slides say the conflict, escalations, वृद्धास डिप्रेशन. इसमें हम बताते हैं 37 स्लाइड के अंदर हम बताएंगे कि कैसे वृद्धा का डिप्रेशन होता है. स्लाइड कंटेंट में करेंगे द आइसोलेशन. आइसोलेशन में बताएंगे वृद्धा फाइंड्स हिमसेल्फ, मतलब वृद्धा खुद को ही ढूंढता है completely, surrounded by the rival lords and betrayed by his own siblings. The choice faced with the total execution. Faced with total execution, he uses final constitution right. वो यूज करता है अपने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन राइट को. समर से इज पर्सनल commanded Deva. The shift. The movie transfers from a complex political drama. The movie transfers to the बहुत deep political drama के ऊपर back into a massive raw action survival film. It's look like massive, harsh and survival film. Here we all are fighting together and going for the dark realities. As the political closes in, Vrinda finds himself completely isolated and betrayed by his own siblings. Betrayed मतलब I think so. Cutting, publish and fighting. Betrayed by his own siblings. Faced with exclusions, he uses his final constitutional right. He used his final constitutional right to summon Devas back to the capital. The narrative immediately shifts gears from political dramas back to the raw action survival. साइकोलॉजी तो तेरी जो भी है ना, तेरी मैं बताऊँ आज तेरी जो भी है ना फ्रेंड सर्किल सब फर्जी है. अन्नू तो छोड़ दिए जोगड़ का ये साइकोलॉजी. Here should we go for the 37 slides. We are going for the 38. How many slides should be left? There are 2 slides should be left, 38 and 39. Here our explanation should be over. So how many slides should be left? There are 2 slides should be left. Then our explanation should be over. So I would like to draw some kinds of personification. You should read and follow the instructions. P L P S Please like, share and SUBSCR. Please follow this. Just a wait. I am going to convert text. What the hell is this? Here we go for the 38 slide. The climax sequence. The fall of the Naranga fraction. The climax sequence. The fall of the Narang fractions using lamps. Step by step practical breakdowns, tracking the spiritual movements and patient shifts of the final battle. Slide content should we go here? That's the battleground. Battleground means here should be all the fightings are held.
The high security inner court of Khansar's central administrative circles. Here means मतलब highly security inner parts of Khansar's central administrative circles. Here should be the execution. क्या बताया कि कौन किसने बोला किसने मैं नहीं बोला इसने बोला है किसी ने नहीं बोला है इसने बोला The execution. Deva operates as the literal इसको छोड़ना आप गाँव आके one man army. और ये जो तू बोल रही है मैं पापा जी को बोल दूंगा तो वो क्या बोलेंगे तेरे को फिर? As a literally one man army, executing a high ranking law to send a clear message to the council. The tone extreme, uncompromising violence, featuring stylized gore and grand epic framing of the hero's power. Here should we go? It's a massive and a beautiful theme of this movie. Here we go the presenter script. The climax features the total destructions of the Narang faction. The climax features the total destructions of the Narang fractions inside a Khansar's inner court. Here a inner court in the Khansars. Deva operates as an unstoppable force. Deva एक फोर्स को ऑपरेट करता है अनस्टॉपेबल फोर्स पब्लिकली executing a high-ranking lord to send a clear message to the council. The tone here is uncompromisingly violent, filtering highly stylized action framing. So I would like to clearly state that our 38 slides should be completed. We are here ready for the final PPT page of our explanation. After this, our explanation should be over. So last page, our explanation. Today's explanation. So last slide, 39 slides. The twist ending. The relieving of the bloodline. Twist ending और रेवलेशन ऑफ द ब्लड लाइन इसके लिए हम कलर चेंज करेंगे बढ़िया सा आई थिंक माई फेवरेट कलर इज ग्रीन एंड आई शुड बी विजुअल लेआउट्स मैसिव ड्यूल एशिएंटेड इंफॉर्मेशन ब्लॉक हाईलाइटिंग द precise closing lines and final visual framings. Followed that Deva is not just a loyal bodyguard. Deva कोई not just a loyal bodyguard. वो loyal bodyguard नहीं है. He's actually the rightful heir to the lived out Shauranga royal bloodline. Shauranga की जो blood west line है मतलब if I say that he is a clear, massive, loyal, friendship, tutorial leadership, all qualities in Deva. The irony means it is a poetic device. It should be the irony. Vrinda has accidentally brought the ultimate threat. Vrinda has accidentally brought the ultimate threat. Who is only thrown directly into the heart of his citadel. The setup intensely changes the entire meaning of
of their fate and setting up an epic future war between the two leaders. It's a world war. Here should we see them fighting with Deva and our main character lead Prabhas. So in Blood Part 2 we can see that fighting between these two guys because Prabhas making a boundary lines and that's cut out by his first love. Done. Presenting script की बात करेंगे तो the final twist completely flips. The entire premise of the films we learns that Deva is not just a loyal friend. So Deva is not just a loyal friend, but the rightful here is the striker Sauranga bloodline. The irony is supreme. Nanda has personally invited the ultimate threat to his family from Susan to his home. Here our all slides should be completed and I am happy to say that I will complete all explanations of this movie. At the last, I would like to. At the last, I would like to just wait. Here, last, I would like to do some words. Please like. First, please like. Subscribe. And share. Thank you for your patience to listen my video, and I am thoughtfully thanking to you all that we are hearing to that our deadline should be over. So thanks.